Welcome to Understanding of the Social Sciences. In this topic, I am taking today development of resources. Last time I have told resources are very vital for the human survival and the maintaining the quality of the life. It was believed the resources are a free gift. Therefore, we can use as much as we want. But this is the problem. We have to use in a very planned way these resources. That is why it is called human being is using resources indiscriminately, without thinking, without planning, which has result to many problems. और पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई है वो है डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज. The first problem which we are facing, that the available resources, whatever these are leading to the depletion. Depletion means the resources are becoming less also, and less in quality and quantity also. Why? Depletion of resources, or second, accumulation of the resources in few hands. Distribution is not equal. Some countries are having more resources, some countries are having less resources. This is the second problem we are facing. And the third problem, indiscriminate exploitation of the resources. We are exploiting these resources, which led to the global ecological crisis. Without thinking, we are overutilizing the resources, जिससे ये प्रॉब्लम आ रही है. So many environmental problem, ecological crisis we are facing, and these problems are depletion of the resources, environmental problem, and degradation of the resources. The quality of the resources are becoming less, and the quantity of the resources is becoming less, or global crisis we are facing because of these problems. Therefore, it is the urgent need that we should use these resources in a planned way. Now, for this purpose, the resources should be distributed in a equable way. Equable way in the sense, some people are having more resources, some are having less, some countries are having more, some countries are having less. So, which in order we should use the distribution of the resources in a such a way to maintain the sustainable quality of the life and global peace. To maintain the quality of life, अगर हम रिसोर्सेज को बड़े सिस्टम से यूज करते हैं तो वी विल मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ए लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड वी विल मेंटेन द ग्लोबल पीस आल्सो फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल, जो ट्रेंड चल रहा है रिसोर्स को यूज करने का, it is going to lead to the global crisis. Therefore, resources planning. For this purpose, we have to make a planning how to use the resources. Planning of resources का मतलब ये होता है कि resources को हमने ऐसे यूज करना, इन सिस्टम में यूज करना है कि it should last for a long time to have the sustainable development. So this is considered a planning, but to have the sustainable development, we have to make planning for utilization of the resources. Now we have to see what is sustainable development. Every country is looking for the sustainable development. Sustainable development is a such development, is economical development which should last for a longer time, not for a short time. If we use the resources indiscriminately, the resources will finish and our development will also finish in a shorter time. If we use in a planned way, this resource will remain for a longer time. For a longer time it will be used, then it is called a sustainable development. Every country is looking for the sustainable development without damaging the global environment.
to use resources in such a way we should not damage global environment also, and the wastage of the resources should not be there. That is in a planned way. For this purpose, one summit which has taken place, that is the Earth Summit, which has taken place in 1992. अर्थ समिट हुई ब्राजील के अंदर. नियर अबाउट 100 delegates of the nation has took place in this. That summit is called Earth Summit. The purpose of Earth Summit was also this: how to save the resources, how to use the resources in a planned way, and how to save the how to save the earth and how to save the environment. This was the purpose of that summit, which was decided. Or now 100 countries, delegates of the 100 countries has taken place in this. It is only to save the earth and to save the environment also, to save the nature also, or it is to also to have the sustainable development also. Now, what is resource planning? Resource planning is the only strategy which has accepted by everyone. Or this strategy is to use the resources in a planned way, in a systematically way, not to waste the resources, to get maximum return by the minimum use of the resources. It is based on the Gandhian philosophy. In Gandhian philosophy also it is said, the brief is the also intelligent. Brevity is the intelligence, or brevity in the intelligence means to use the resources in intelligent way, in a planned way, or to maintain the environmental safe also. Some countries which are rich in resources, some countries which are poor in resources. Unequal distribution is there. It is often said, particularly one American using the resources 40 times more than that of the average one Somalian. So much equal distribution is not there. For example, in India also, some states are very much rich in resources, but they are not using their resources because of the lack of the economical development and the lack of the scientific strategy. Or for example, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, they are very much rich in the mineral resources. Arunachal Pradesh, very much rich in the water resources. Or Rajasthan, very much rich in the solar. Or but the cold desert of the Ladakh, isolated from the rest of the world, but it is rich in resources. But the resources are not being used over there, because there should be balanced resource planning at the national level, at the state level, and at the local level. Balance means where resources are more, that should be diverted to those nations where the resources are less. And where there is a surplus, it should be given to the other countries, other states. It is called the balanced use of the resources, and this is called the planning also. Now, resources planning in India. How we are using resources in India particularly. Resources planning, to use resources in a planned way. In India, 5-year plannings are made. 5-year plannings are made. 5-year plannings are nothing but to utilize the available resources in such a way to get a maximum return in a given time. So, for this, what steps are taken in India to use the resources in a planning way? The first step is taken: identification and the inventory of the resources across the region. First, we have to identify those areas which are having these resources.
हमें वो एरियाज तलाश करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, इन्वेंट करने हैं कि जहां पर रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, कितने हैं और कैसे हैं। और इन्वेंटरी, वी हैव टू डिस्कवर द न्यू एरियाज आल्सो वेयर द रिसोर्सेज आर देयर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और हाउ इट इज डन, ऐसा कैसे किया जा रहा है? फर्स्ट, बाय टेकिंग सर्वे, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सर्वे की जाती है कि कितने रिसोर्सेज हैं, कहां हैं। मैपिंग की जाती है कि कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। और यह देखा जाता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी कितनी है और उनकी क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटी अच्छे हैं या बुरे हैं, कम हैं या ज्यादा हैं। क्वांटिटी में यह देखा जाता है कि कम है या ज्यादा है। फिर एस्टिमेट किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग प्लानिंग। दूसरा स्टेप, इवॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर उस प्लानिंग को लागू किया जाता है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और जो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये दूसरा स्टेप किया जाता है। और तीसरा स्टेप, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। तो मैचिंग, इसमें वर्ड किया गया है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट को मैच किया जाता है विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, कि कितने रिसोर्स को डेवलप करने से कितनी डेवलपमेंट हम हासिल करेंगे। दीज आर द स्टेप्स मेकिंग फॉर द प्लानिंग, दैट इज स्टेप्स आर टेकन इन इंडिया फॉर द प्लानिंग ऑफ द रिसोर्स डेवलपमेंट। 3 steps are taken. I'm repeating again. Identification, first step. Second, evolving. And third, matching. आइडेंटिफिकेशन में यह देखा जाता है कि कितने रिसोर्स कहां पर है, और इवॉल्विंग, फिर उस रिसोर्स को लागू किया जाता है, स्टेप को लागू किया जाता है। थर्ड, उसे मैच किया जाता है कि कितने रिसोर्स से कितनी डेवलपमेंट होगी। दीज आर द 3 steps. Now, for these steps, India has started the 5-year plans. First 5-year plan was started in India in 1952. These steps are out continuous. Availability of the resources is necessary condition for the development. किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए availability of the resources there should be resources. Only the availability is not enough. I have in beginning told, मैंने शुरू में बता दिया कि रिसोर्सेज होना काफी नहीं है, उनको यूज भी करना पड़ता है। और यूज करने के लिए अगर हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। और डेवलपमेंट कैसे करना है? इफ देयर इज ए टेक्नोलॉजी, इफ देयर इज ए इंस्टीट्यूशन, इफ वी डोंट हैव, then it will stop our development. There is a combination of the resources with technology and the economic development. Then the resources can be developed. There are many there are many areas, many country states which are rich in resources. मैंने पहले कहा है, but they don't have technology. उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, they don't have resources but they are rich because they have technology how to utilize the resources. This is the main thing. Now, as far as India is concerned, what is the history of India as far as the development of the resources is there? India, as far as the history is concerned, India has colony of the other nations, Britain, because of its resources. The colonies, British, Dutch, whatever they have come to India, it is the attraction of the resources. वो यहां किस लिए आए थे? इंडिया को कॉलोनी क्यों बनाया? क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज थे। और इट ऑलवेज अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। 10th सेंचुरी के बाद इंडिया में फॉरेन इन्वेडर्स आए सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से।
The resources are the main attraction for the invaders. Huh. The colonizer, they have one advantage. They have advanced science and technology. उनके पास एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी. दे हैव डेवलप्ड दिस रिसोर्सेज. उन्होंने इस रिसोर्सेज को डेवलप किया और दे हैव बिकम प्रॉस्पेरियस. They have become prosperous because of. Therefore, resources can contribute in the development. तो ये क्लियर हो चुका है कि because of the development of the resources can contribute to the development of the nation also. Or appropriate, but for that appropriate technology is needed. Appropriate technology is needed. And appropriate accessibility is also needed, economy is also needed. Now, the development of India in particular does not involve the availability of resources, but also the technology and the human resources also. Also the technology also. As far as India is concerned, development of the resources is not only because of the availability of the resources, but because of the technology also, because of the quality of the human resource also. मैंने हमेशा बताया है कि this is human resource which always develop the other resources. So India is developing its resources because of two causes, technology and the human resource. Now the last is conservation of the resources. Whatever the resources are available, we are having problem. प्रॉब्लम यह है कि रिसोर्सेज बहुत कम होते जा रहे हैं. क्यों कम होते, और उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती जा रही है और उनकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, क्योंकि वी आर यूटिलाइजिंग विदाउट एनी थिंकिंग. ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया है हमने. बट वी आर लुकिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम उस डेवलपमेंट की खोज कर रहे हैं जो ज्यादा चले. उसके लिए वी हैव टू सेव द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर. टू सेव द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर is called conservation of the resource. It is essential. But how to conserve it? Now the conservation of the resources has become the main concern of the leaders and the thinkers also. अब हर कोई सोचने लगा है कि इसे कैसे बचाया जाए. इसका एक ही तरीका है, द ओनली यूज, टू यूज इन ए प्लांट वे, अवॉइड द वेस्टेज, मिनिमम यूज मैक्सिमम रिटर्न. मिनिमम यूज करो, मैक्सिमम रिटर्न करो. क्योंकि लालच हमारा बहुत ज्यादा है. हम क्योंकि रिसोर्सेज को फ्री समझते हैं, हम ओवर यूटिलाइजेशन में लगे हुए हैं. ओवर यूटिलाइजेशन ऐसा है कि रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने. सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है? द ऑयल इज गोइंग टू फिनिश इन द नेक्स्ट 100 years, नेक्स्ट 50 years. वी हैव कोल रिजर्व्स 100 years इन इंडिया. अगर हम उसे यूटिलाइज करते रहे, ओवर यूटिलाइजेशन करते रहे, तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगे. तो इसलिए देयर इज अर्जेंट नीड टू कंजर्वेट द रिसोर्सेज. लेकिन हाउ टू कंजर्वेट इट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ. दैट इज द थिंकर्स आर थिंकिंग. देयर इज ए गांधीयन फिलॉसफी, देयर इज ए एनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन. रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हर एक के लिए बहुत है, बट देयर इज नॉट एनफ फॉर द ग्रीडी वन. लेकिन लालच के आगे ये रिसोर्सेज बहुत कम है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लालच में हम बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं. लालच से पेट कभी भरता नहीं. तो इसलिए ये कहा गया है
कि रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन ए सिस्टम, और सिस्टम ये है टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। एक तो रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम करना चाहिए, और दूसरा ये है इट शुड बी यूज इन ए प्लान वे। प्लानिंग से इसे यूज किया जाए, और इसको प्लानिंग से यूज किया जाए ताकि इट कैन सस्टेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसके अलावा ये है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन इन द सेंस देयर शुड नॉट बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से सो दैट मास प्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इट शुड बी रिप्लेस विद द प्रोडक्शन फॉर द मास। हम ज्यादा यूज कर रहे हैं फॉर द मास प्रोडक्शन। नो, हम ज्यादा यूज करें फॉर द मास, नॉट फॉर द मास प्रोडक्शन बट फॉर द मासेस। हम ज्यादा से ज्यादा निकाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कहते हैं मास प्रोडक्शन हो। अगर मास प्रोडक्शन होगी तो रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, मिनरल्स ज्यादा यूज होंगे, पैसा ज्यादा यूज होगा। कहते हैं नाउ यू हैव द फिलॉसफी नॉट मास प्रोडक्शन बट फॉर द मासेस। लोगों के लिए यूज करें, मासेस के लिए यूज करें, मास प्रोडक्शन में करें। और इसके अलावा प्रॉब्लम ये आती जा रही है कि प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन उसका सारा इफेक्ट जो है एनवायरमेंट पे पड़ रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। वी शुड प्रोड्यूस, मास प्रोडक्शन शुड बी देयर बट फॉर मासेस विदाउट वेस्टिंग, एंड टू हैव ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट without affecting global environment. This is called the conservation of the resource. That's all.